their fight versus the Wrestling Federation. मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। The dangle between the wrestlers and the Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Singh continues to simmer. It's only escalating with each passing day. The wrestlers will be meeting Sports Minister Anurag Thakur at 6 p.m. today. This is the second round of talks that will take place after a marathon late-night meeting yesterday. Sources have told CNN News 18 that the government will be forming a 3-member committee that will address the grievances that have been put forth by these protesting wrestlers. Meanwhile, the Indian Olympic Association has also called for an emergency meeting at 5:45 p.m. today to discuss these issues. This meeting comes after a letter was written by the protesting wrestlers to the IOA President P.T. Usha. A few wrestlers have also boycotted a wrestling event in Gonda in solidarity with the wrestlers protesting here in the national capital at Jantar Mantar. Now, Brij Bhushan Sharan, who is the boss or the president of the Wrestling Federation of India, is brazening it out. He has stated that he will not resign from the position and no one can force him to do so, going on to say that this is all a conspiracy and he is going to expose who's behind it in a short while from now. नहीं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम को करेंगे जी। तो बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुछ तो आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली में तो लगातार वो मंत्री से मिल करके से बातें कर रहे हैं। देंगे ना शाम को देंगे तो शाम शाम इस्तीफा देने की बात तो नहीं है अभी। शाम को देंगे, इस्तीफा कोई सवाल है नहीं। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। हम तो ब्रिज भूषण जी का सामने इंतजार कर रहे हैं, कब वो सामने आए। वो तो भाग रहे हैं, तो हम उनका कोई इंतजार नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो चीजें हमने बताई हैं और हम विद प्रूफ है। अपने तक की धमकी देते थे, जब मैं बोल रहा हूँ अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीन शॉट है, जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं, जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सर, आप आज गए थे वहां पे मिलने के लिए रेसलर्स से, आपकी बात हुई उनसे, क्या बोला उन्होंने आपको? जी मैं अपना सपोर्ट देने के लिए उनके पास गया था और मैंने अपना सपोर्ट दिया कि लाइक मैं आपके साथ हूँ। और एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है ना कि जानता हूँ मैं तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है, मैं तो बस साथ देने आया हूँ। तो वो बस मैं साथ देने आया था। वो स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ खड़ा हूँ, बस मैं तो साथ खड़ा हूँ, लाइक आई एम विद यू, दैट्स व्हाई आई वेंट देयर। जी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, सीबीआई जांच हो, दैट्स इट। ब्रिज भूषण सिंह जी ने कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बने रहेंगे। जी वो तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे उनका कि उसमें क्या बोलना है और क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। हर एक कहते मुद्दे पर यही चीज़ें होती हैं। किसान आंदोलन हुआ था तब भी यही काम था, जवान आए थे तब भी यही था, अब पहलवानों का नंबर आ गया, अगली बार किसी और का होगा, अगली बार आपका भी नंबर आ सकता है। तो आपको भी ऐसे ही कहा जाए कि आप भी कांग्रेसी हो, तो ऐसे नहीं होता ना। तो ये राजनीतिक नहीं है, कांग्रेस राजनीति नहीं। जी आपको लगता है कहीं पर, बताइए, लगता है तो दिखाइएगा लोगों को। ब्रिज भूषण सिंह जी ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा था कि सवाल ही नहीं उठता, मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा। ये उनकी हठधर्मिता कहूंगी मैं। इतने बड़े एलिगेशन आपके ऊपर इस देश के खिलाड़ी लगा रहे हैं, तो इसके लिए तो आपका तो वो जो कुर्सी है वो आपको ज़्यादा प्यारी है, खिलाड़ियों का भविष्य आपके लिए प्यारा नहीं है। ये हठधर्मिता उनके बयान से झलकती है। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, सारी पार्टियां इसमें पॉलिटिक्स कर रही हैं, ऐसा कहना है। बीजेपी का भी स्टेट से कोई लीडर मेरे ख्याल से वहाँ नहीं पहुँचे थे।
और उनके जो प्रदर्शन है वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई नेता गया था। दूसरा, बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं कि ये कोई भी जब दोषी होता है, कोई भी पार्टी जब अपना बचाव करती है तो दूसरी पार्टी पे करती है। मैं इस सवाल के जवाब में यही कहना चाहूँगी कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कमज़ोर किया जा रहा है। उनके जो खून पसीने की कमाई से जीते हुए जो पदक हैं उनको बेइज्जत किया जा रहा है और उनकी जो मांगे हैं उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जो आरोप लगाए सत्य हैं और निष्पक्ष जांच एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए और जो गलती अगर झूठे आरोप होते तो आज यह लड़की यहाँ बैठी थी और जब इनका जो कहीं जरूरत पड़ी तो जिस लड़की में जो बीतती है वो अपने आप वहीं बता देगी। मुझे पूरी आस उम्मीद है सरकार बढ़िया फैसला लेगी। देखिए, मैं ऐसे भ्रष्ट आदमी को जो है इस पद पर नहीं बना रहना चाहिए। जो बढ़िया जो कुश्ती का जो कोई प्लेयर है, कुश्ती का बढ़िया आदमी है, सब उसको जो है या कोई और स्पोर्ट्समैन है उसको इस पद पर जो कुश्ती का बढ़िया इसके अध्यक्ष बनाना चाहिए। मैं कोई जो इस तरह लड़कियां आवाज़ उठाएंगी तो मैं मानता हूँ भविष्य में खतरा टल जाएगा। So unfortunate because the allegations are against the sitting president of the Wrestling Federation of India, who also happens to be a 6-term BJP MP, and it is almost like the seat belongs to the BJP, and the same person has been sitting there for a very long time. These accusations are extremely serious. The people making them are, of course, they are the pride of our country. What is even more unfortunate is that the person continues to sit there, continues to say he will not resign. And I think it's something as serious as this. Even to prove his innocence, he should step down, and if he is acquitted of everything, he is welcome to come back. But you cannot have the situation where the minister is unable and the BJP government is unable to get their own MP to listen to their whip and make him resign. Politics is happening over that. The opposition has used this as an opportunity to lash on at the central government, and that's exactly what these protesting wrestlers have come out to negate. Sakshi Malik has now taken to Twitter where she says this movement is about the players and the future of the game. Our movement is against the federation and its president. No political party should do their politics for their own benefit. This is what Sakshi Malik has now come out and said. This is in line with what Bajrang Punia just a short while ago as well said on social media. Nikhil, my colleague, now joins us live from Jantar Mantar. We also have our reporters on ground in Gonda, where we are expecting the Wrestling Federation boss to address the media in just a short while from now. But Nikhil, coming to you first, we've seen these wrestlers time and again since yesterday come out and say that this is our cause. This is a cause for the game, for the people who win laurels for the country. It's about their dignity and their pride, and the opposition should not just hijack their cause and make this their own. Once again, Sakshi Malik and Bajrang Punia coming out and reiterating that sentiment. Well, Poonam, this is the tweet which is now out in the public domain by Bajrang Punia and Sakshi Malik, as well as rightly mentioned by you. But this is something which becomes even crucial after the visit of boxer Vijender Singh at this particular place. This morning he was here very much. He was extending his support to all the wrestlers who are continuously protesting for the demands of their community for the day 3 now. So this was the protest which was being held, for day 3 as well. And this morning we have seen that how boxer Vijender Singh, who is also a part of the Indian National Congress, after visiting this place, he held a press conference. He was speaking to the media persons as well. This is the reason why the tweet has been out by Sakshi Malik and Bajrang Punia as well. They are clearly saying that this is the protest for the future of the players and for the sake of games. This has nothing to do anything with the politics which is currently turning around. But currently these are the visuals we are showing you here on the screen of the CNN News 18. Many of the wrestlers are continuously sitting here. In fact, we have been told that at about 6 p.m. Poonam, they are expected to visit for the second round of meeting with the Sports Minister Anurag Thakur at his official residence. But they continue to sit here. You can see many of the local people are also part of this particular protest which is underway for day 3 now here at Jantar Mantar. So the locals from the Khap Panchayat as well, they are very much part of the same, and also on dais, so to say, which is here at the Jantar Mantar. Many of the athletes or the protesters, so to say, they are continuously sitting here, and we have been told that at about 5:45 p.m. that means
While from now, there is this crucial meeting which is going to take place with the Indian Olympics Association as well here in the national capital. So there are a couple of things, couple of developments which are expected to be lined up today. So in a short while from now, we will get to see as to what the fresh developments have taken this, this day. Because if we go by the details which happened till yesterday, we have been told that 10:45 p.m. was the time when the wrestlers had gone on to meet the sports Minister Anurag Thakur, and the meeting lasted for 4 hours. It concluded at about 1:45 a.m. this morning, but nothing conclusive or concrete came out from that particular meeting. And today as well, this morning they were expected to visit yet again for the meeting, and many of the officials from the Sports Authority of India, along with the Secretary of the Sports Ministry, Sujata Chaturvedi, they were very much part of the breakfast for which the wrestlers and the delegation of the protesters they were invited for, but they had not gone to that particular place. But now, as per the fresh developments, we have been given to inform that at about 6 p.m. they are again going to meet the Sports Minister of India, Anurag Thakur. I would urge my camera person to again show you the visual. There is some kind of movement which is now seen here at this particular place. There is proper deployment and heavy deployment of media as well. And see, if you can see that there is a perimeter of the barricading. Inside the barricading, there is a security cover which has been given to all the protesters as well. And if we go by the further details, Poonam, at about 4 p.m. Brij Bhushan Sharan Singh, who is the main person against whom the allegations are, he was expected to address a press conference as well at about 4 p.m. But no sign has come from that end as well, which means that behind the scenes some of the deliberations are taking place continuously from every corner. In fact, if we go by the wrestlers as well, who are very much part of the protest, they are also conducting their internal meetings as to what their further course of action Absolutely, is going and to be. it is the end of time as far as the Jantar Mantar protest goes, because the permission is only till about 5:30 p.m. and when they have to vacate that protest site, they are readying their strategy now before the meeting with Anurag Thakur for a second time in 24 hours. And Arun Dhanta, my colleague, joins us from outside the Union Sports Minister's residence. Arun Dhanta, we know at 6 p.m. is when the delegation of these wrestlers will be meeting the Union Sports Minister. This is after the marathon meeting that took place yesterday late at night. But let's just cut across to Vinesh Fogart, who's speaking at the protest site there. तो विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि मंत्री जी ने उन्हें फिर से मिलने का वक्त दिया है, तो फिर बातें क्या रहेगी, और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहीं पे मान लेते हैं तब तो अच्छा है, वरना यहीं पर मैच के साथ वो लोग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। एक मीटिंग से अगर सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता, लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हमें एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ कि कुछ भी नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। और देखिए, जिस चीज़ पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज़ पे अगर हमारी सहमति हो गई से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ पे मिलेंगे। गणेश FIR क्यों नहीं हो रही है? कमेटी बनाने की बात हुई थी, आप लोगों से नाम मांगे गए हैं, इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि कौन वो नाम? चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ चीज, क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। FIR क्यों नहीं करवाए हैं आपने? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से। हम यहाँ आए थे कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्मसम्मान ही हमारा सबके सामने तो बिखर गया तो फिर क्या लड़ाई है? आत्मसम्मान तो हमारा मतलब खोल चुका था, तभी हम सड़क पे आए हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत। ब्रजभूषण का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही हैं। देखिए, मैं
वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये हिलेंगे नहीं। विनेश वो सबूत की बात कर रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं। सबूत क्या है आपके पास? सबूत कब दिखाएंगे? वो सबूत के लिए पूछ रहे हैं। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। आप पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रही हैं? फिर पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही है? सवाल ये है 3 मुद्दे, 3 मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट कौन से हैं? इसको लेकर विचार है। विनेश, जैसे कि महिला फौज के मुद्दा था उसे लेकिन नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात है। आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चाहती हैं कि सरकार तुरंत उन मांगों पर विचार करे? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए जिस पर हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। क्योंकि देखिए हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम तो डिसीजन तो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ओलंपिक संघ पर जो दस्तखत है उनमें से सिर्फ 5 और 6 खिलाड़ियों के ही सिग्नेचर हैं। आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं सब आपके साथ हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। लीजिए, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि जो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाला, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है विनेश बृजभूषण शरण सिंह। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखती है? विनेश वो कह रहे हैं सारी फर्जी बातें। विनेश इधर, विनेश वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप झूठे हैं, ये सिर्फ सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं। विनेश राजनीति में मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो वो उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी। आप उनका इस्तीफा चाहती हैं या पूरा कुश्ती संघ भंग हो? आप लोगों की ये डिमांड है? परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए, हम राजनीति के लिए आए थे। हमारे सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों पे जो जा रहे थे या हर एक चीज के लिए गिराना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। विनेश बृजभूषण जी का कहना है कि 10 सालों से उनके ऊपर नहीं लगे, और यही वो खिलाड़ी 10 दिन पहले उनकी तारीफ करते थे अलग अलग मंचों से। विनेश वो मानसिक उत्पीड़न क्या था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके दिमाग में आई थी? उसके बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, अध्यक्ष से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे जब मैं मैच आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब समझदार हैं, देखिए अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है? विनेश बजरंग ने कहा था कि वे विदेश जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो अपने घर पर हूँ, अपने ऑफिस में हूँ। विनेश बजरंग ने कहा था कि विदेश भाग जाएंगे। आपका माइक
साफ आवाज जा नहीं पा रही है। विनेश आपका माइक बजरंग टीवी पे नहीं जा पा रही है। कोई आपने ऑन कहा कर था सकता विदेश है भाग क्या जाएंगे, please? वो कह रहे हैं मैं यही हूँ, यूपी में हूँ, टीवी मैं पे बाहर साफ नहीं गया हूँ। आवाज जाए। अच्छी बात है, वो यूपी में हम जा रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। इसको बुजुर्ग को दें। माइक पे बजरंग कहा जा रहा है कि माइक हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश हो रहा है। वो जितनी बातें वो कुछ भी बोलते रहे। हमने जो बात की रियासत का दी है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं करते? बजरंग क्या आप लोग एफआईआर करवाएंगे? बजरंग क्या आप लोग एफआईआर करवाएंगे? बजरंग एफआईआर क्या करवाएंगे? एफआईआर बजरंग एफआईआर में क्या होगा? एफआईआर में क्या होगा बजरंग? एफआईआर में क्या होगा? हर काम करेंगे। एक बार हम अभी जी के पास आ रहे हैं, उसके पास लोग बात करने के बाद आपको बताएंगे। कल क्या आश्वासन मिला था बजरंग? कल यहाँ पे आपको रेसलिंग मैच भी देखने को कल क्या आश्वासन मिला था बजरंग? आप लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया गया था खेल मंत्री की ओर से? संतुष्ट हो गए तो आपने भी एक बात कही कि आपने बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। अकेले हम नहीं है कि हम आगे हाँ ठीक है ओके है, बात करेंगे खिलाड़ियों से, वो सहमत हो गए। और इस तरह की भी जानकारी है कि यौन शोषण के आरोपों पर कोई ठोस जानकारी आप लोग नहीं दे पाए। फोन आया है जी, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर है या कोचेस के ऊपर? ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। मैं हर चीज ओपन नहीं, अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा विनेश? अध्यक्ष जी पे होगा। अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत ही नहीं की, हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। क्या विनेश यहाँ पर वो तमाम लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अध्यक्ष के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं? क्या वो लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं? अगर उनके साथ में बोलोगे, इतना सब होने के बाद तो उनके थोड़ी बहुत शर्म आया हो। है ही नहीं, लेकिन हमारे पास इज्जत सम्मान है। हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितना खेल मंत्री जी से देश के गृह मंत्री जी से 2 बार चर्चाएं हो रही हैं, हर चीज पर डिस्कशन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पे लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है। नौकरी है। खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया विनेश? खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? मीटिंग के बाद में बता देंगे, नहीं तो अगर कुछ भी अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो कल 10 बजे हम यही मिलेंगे। मामला किस चीज पर फंसा हुआ है? खेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया आपको? विनेश, खेल मंत्री से क्या आश्वासन मिला, क्या जवाब मिला उनसे? सारे खिलाड़ी तो इधर ही हैं, सब खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं तो बोल रही थी कि बच्चों को बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में है, जो नहीं पहुंचे हैं, वापिस आ जाओ। ब्रजभूषण सिंह का कहना है विनेश, ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि केवल हरियाणा के ही कुछ खिलाड़ी एक ही परिवार के यहाँ पर बैठे हुए हैं। दबा दिया गया, शख्स मांगे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? महिला जूनियर कोच का मुद्दा था जो अभी का फिलहाल का, जो हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगे थे, उसमें खुद उन्होंने बयान दिए, इस पे क्या बोलोगे? विनेश, 6 बजे मीटिंग होने के बाद में हमारा जो रेसलिंग का जो मुद्दा चल
रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता दिया जाएगा। खेल मंत्री से क्या बात हुई थी? सबसे ज्यादा किस बात पर फंसा हुआ है? आप जितने भी सवाल पूछेंगे तो हम मतलब एग्रीमेंट हो रहा है वो अभी मैं ओपनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? मैं बस वही अध्यक्ष जी के हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आंखों में आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। बस हमारी आदमी बोल रहे हैं कि अध्यक्ष को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों में से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अध्यक्ष दोनों के ऊपर क्या आरोप लगाए आपने? विनेश, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हुए किसी भी चीज पे। कोई भी मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है तो कल हम फिर से 10 बजे यही मिलेंगे। क्या ये हरियाणा और यूपी की भी लड़ाई है विनेश? क्या ये हरियाणा और यूपी की भी लड़ाई? देखिए विनेश फोगाट यहाँ पर बहुत दूरी पर साक्षी माली की भाई बैठ जाओ यार, साइड हो जाओ। क्या परेशानी है? That was Vinesh Foghat there, going on to say that our demands are firm. We want the resignation, the disbandment of the Wrestling Federation of India. Also briefing what the last night's meeting was about. They are going to be putting forth these demands and these grievances once again to the Union Sports Minister in just a short while from now at 6 p.m. Arun Dhanta is reporting from the residence of the Union Sports Minister. Arun, they've just left from Jantar Mantar. That protest is over for the day. At 6 o'clock is when we're expecting them to be present at the residence of Anurag Thakur. Are we also going to be seeing other officials from the Sports Ministry there? Arun? We'll try and reconnect with my colleague Arun Dhanta there, who's getting us live updates from Union Sports Minister Anurag Thakur's residence. The protest at Jantar Mantar is over for the day. Remember, they have permission only to protest until about 5:30 as per the Delhi police. They have been leaving the protest site at 5 every single evening for the last 3 days, only to return the next day. That protest continues. We'll wait and watch out of what happens at that key meeting and whether or not there is a solution. Before now, a quick break. इस तरह से यौन शोषण किया है, आप कोई ऐसा तो सामने नहीं आया उठ के कि भाई हाँ मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, विनेश फोगाट ने जो आज बोला है, आपने सुना भी है, विनेश फोगाट ने जो बोला कि कल तक 2-3 लड़कियां ही थी, आज 5-6 लड़कियां उनके संपर्क में हैं और उनको ये मजबूरी ना की जाए कि वो पुलिस कंप्लेंट किया जाए। आपने सुना ना? देखिए, एक नहीं मैंने सुना है, आपने सुना है, अच्छे से सुना है, पर ये बताइए कि मैं भी ओलंपियन हूं, मैं भी कोई अगर इस तरह की बात बोलूंगा कि विश्वास किया जाएगा कि एक ही दम मैं बोल दूंगा कि भाई ये हो रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे मेरा? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? 3-3, 4-4 ओलंपियन रेसलर्स जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो सड़क पे बैठे हैं और आरोप लगा रहे हैं पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने। क्या आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, नहीं ठीक है, आप वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं क्या सच मान लेंगे? क्या आप लोग सच मान रहे हो क्या इस बात को? सर जी, उसमें तो कार्रवाई होगी, पुलिस कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगी, वो मैं मान सकता हूं, वो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम वो इस्तीफा तो दे दें। कम से कम वो ये कह दे कि मैं पेंडिंग इंक्वायरी स्टेप डाउन कर रहा हूं, इतना तो बनता है। नहीं, वो क्यों बोल दे, ये कह दें कि भाई हाँ ये गलत, ये मैंने किया है, क्योंकि आरोप तो उनके खिलाफ है, इसलिए तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। आरोप तो आपके खिलाफ नहीं है, मेरे खिलाफ नहीं है, आरोप तो उनके खिलाफ है, तो नैतिक तौर पे तो जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। क्या आरोप है? यौन शोषण की आरोप है। कौन आरोप कौन बता रहा है? करप्शन की आरोप है, भ्रष्टाचार की आरोप है। 3-4 ओलंपियन मैं भी लेके बैठ जाऊं, मैं भी आरोप लगाने लगूं, मानेगा? क्या बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी? मतलब देश देख रहा है, सुन रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? बताइए मुझे एक ही बात। नहीं, आप थोड़ा मतलब ध्यान से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है,
आप ये कह सकते हैं कि नहीं सर, ये आरोप तो बोल रहा हूं, नहीं एफआईआर होनी चाहिए, कोर्ट में जानी चाहिए, ये सब ठीक है, मैं मान सकता हूं। नहीं सर, लेकिन ये तो मत कहिए कि 3-4 आदमी के साथ बैठ जाओ और मैं भी बोल दूं कि क्या सच हो जाएगा। क्या विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक 3-4 आदमी हैं? आपके नजरिए में वो जरा सा आदमी है, साधारण आदमी है? क्या 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 कह रहे हैं? स्पोर्ट्समैन है आज, अच्छे नहीं सुनिए, आज अच्छे स्पोर्ट्समैन है, मैं भी बोलता हूँ जी लेकिन ये थोड़ी है कि आप जब तक इंक्वायरी ना हो, जब तक कोई जांच ना हो, जब तक जांच करानी पड़ेगी। हम यही कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, लेकिन जांच तभी हो पाएगी जब बृजभूषण सिंह, एंड आई वांट जी राजारामन विकृष्ण स्वामी आल्सो टू weigh in on this. There is no way you can have an independent, unbiased investigation against Brijbhushan Singh and the coaches as long as the people who are accused of that are still sitting in positions of power. It's as simple as that. You have to step down pending inquiry. Of course, nobody is prejudging the outcome. Let the police go into the heart of the matter and come to a conclusion one way or the other. But I'm convinced that you can't have that person sitting in a position of authority and have an independent inquiry. It can't be possible. Zaka, what you're saying is right. If the Wrestling Federation of India is conducting an inquiry, then the Wrestling Federation of India president perhaps need to step aside. But if the inquiry is being done by the sports ministry or even by the police, for example, or the National Commission of Women, then maybe he can continue where he is and he's not going to influence the witnesses. I think it's important for us to understand that who is going to conduct the inquiry. The sports ministry has asked for a response from the Wrestling Federation of India. Yep. And I really believe that the wrestlers must move courts of law, they must move the police, they must move the National Commission of Women, and then perhaps we can talk about how the president needs to step aside so that there is a sense of fair play and justice that comes in when a hearing happens. No, I want to ask V. Krishnaswamy. So, one of the things that Bajrang Punia today said in his press conference is, just by this gentleman Brijbhushan Singh stepping down, you are not going to rid his power or his influence on the federation. He's just going to fill it up with a proxy. Now, they are saying the entire WFI needs to be dissolved. An entirely new management, an entirely new federation should come in its place, which does not have Brijbhushan Singh's influence or control. Do you buy that? No, I really don't buy that. I mean, you can't say that there is just, if there is just one bad apple, you can't throw away the entire basket. I mean, you just can't get rid of that. I'm sure if India has produced some good wrestling results over the past few years, it's also because there are some good coaches, there are some good officials. I'm sure about that. योगेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरा देश देख रहा है कैसे पिछले 2 दिनों से हमारे जो रेसलर्स हैं वो सड़क पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उनका मानना ये है कि सिर्फ बृजभूषण सिंह जो अध्यक्ष हैं उनके जाने से या उनके इस्तीफा से मामला सुलझेगा नहीं। उनको ये चाहिए कि पूरा जो WFI है वो भंग किया जाए। देखिए, मेरे को ये लगता नहीं है कि बात पूरे देश की जो बॉडी है ये भंग होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड में इसका ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। हाँ, जो इनकी असली जो मांग है, जो खिलाड़ियों की जो आरोप लगाया है यौन शोषण का, उस पे सरकार को जो ध्यान देना चाहिए, उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। जो चीजें हैं जो खिलाड़ी जहाँ से परेशान है उस पे काम होना चाहिए। जो इनकी दिक्कतें हैं वो है। और मेरे को लगता है कि पूरी बॉडी, पूरे देश की जो स्टेट बॉडी है वो ऐसे खत्म करना, ये शायद कहीं भी प्रावधान में ये चीजें नहीं लिखी है। और ज्यादा मेरे को पता नहीं, पर जहाँ तक मेरे को लगता है, हाँ, जो चीजें जो मांगे हैं, जो डिमांड है, जो पहलवानों की जो चीजें हैं कि भाई उन पे यौन शोषण हुआ है, तो उस पे सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। योगेश्वर जी, सबसे जो महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने लगाए हैं कि वो है यौन शोषण का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ये तो क्रिमिनल है, इसके लिए कंप्लेंट होनी चाहिए, उसके बाद FIR होनी चाहिए। विनेश फोगाट ने आज ये भी बोला कि कल तक तो 2-3 लड़कियां थी जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आज 5 से 6 महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बाकी जगहों से 5 से 6 लड़कियां ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है। तो आपको लगता है कि तुरंत इस पे FIR होनी चाहिए और पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए? कानून के सभी कानून का एक कानून बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है।
हमारी कि उसके दायरे में रह के हम क्या काम कर सकते हैं, कानून से बाहर रह के हम क्या काम कर सकते हैं। सरकार भी बस एक यही कर सकती है इसमें कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो जांच किसी से हो, चाहे सीबीआई से जांच हो। पर जो जी। हम आरोप लगाए हैं, जो अगर जब तक उस एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक मेरे को लगता नहीं ये चीजें होंगी, जब तक कोई सामने आके ये चीजें नहीं बोलेगा। कोई विक्टिम तो इस चीज में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके अलग तो ऐसे तो बीच में कोई ऐसी बात आती है तो लोग जब तक सामने नहीं देखते, प्रोटेस्ट को नहीं देखते कि भाई ये चीजें हैं, तब तक उसमें बड़ी जी। दिक्कतें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Let me now go across to our guest. We'll be joined in a moment by Rahul Mehra. He's the Delhi Government Counsel. He's the man who took the BCCI to court. V. Krishnaswamy is sports journalist. Jayaprakash is joint secretary of the WFI and wrestler. Here in our studios, G. Rajaraman, sports commentator. Varsha Chaudhary is a wrestler as well. Let me start with Jayaprakash. आप joint secretary हो WFI का. I think it's got to a situation where Brijbhushan Singh जो है वो WFI के अध्यक्ष के रूप में अभी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रेसलर्स ने बोला है मिनिमम स्टेप, बेसिक मिनिमम स्टेप जो है, दिस हैज टू बी टेकन, ही हैज टू गो. आपका We now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? Have a nice day. Shame on you, sir. Shame on you. There's a fierce political war of words that has now erupted over the Pfizer vaccine. Union Minister Rajeev Chandrasekhar took to Twitter this afternoon and slammed the opposition party Congress, saying that Pfizer tried to bully the Indian government into accepting conditions of indemnity, and the trio of Rahul Gandhi, P. Chidambaram and Jairam Ramesh kept pushing the case of these foreign vaccines during COVID-19. Rajeev Chandrasekhar claimed that vindication after Pfizer's CEO got confronted in Davos, where the World Economic Forum is underway, over the initial efficacy claims of the vaccine that were being made by the company. Meanwhile, Jairam Ramesh of the Congress party has not only dismissed the allegations and the charge that the union minister has made, he even went on to call the minister a liar and used unparliamentary language. Before we get into the debate of whether or not it is an upper hand for the government, is it a vindication for the government, listen in to what transpired in Davos with the CEO of Pfizer. I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. Is it time to apologise to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine? Yeah, you have a little bit right. Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years? What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions? Shame on you, sir. Shame on you. That was what transpired in Davos, but the political fight is brewing here back home in India within the Congress party and the central government. Tushar Gupta, senior editor of Swaraj magazine, joins us on this broadcast. Congress's spokesperson Swati Malik with me as well. And Swati Malik, I'd like to ask you, we had Jairam Ramesh come out today and say and use language that I would not want to use here on national television, but said that this is nothing but complete lies by the union minister. But can Jairam Ramesh come out and dismiss the fact that it was P. Chidambaram who back in 2021 did come out and say that for reasons only known to the government, they are blocking vaccines like Moderna and Pfizer? Poonam, I'm glad you've quoted Mr. Chidambaram because that's what he said. And the reason behind saying that was because the government was not conveying what were the actual reasons. All that the Congress has ever wanted and all we keep wanting issue after issue is to have a discussion, have a debate. I completely understand and I agree that, of course, Pfizer, the statement that's been made today, of course, the CEO avoiding the question, etc. He talks a lot about the
vaccine, but we are no experts to comment on that in terms of the field of expertise and medical field. But yes, we did question it. The only reason, the only cause for us to continue to ask for more and more vaccines was only so that everybody can be vaccinated. We are only talking about welfare of our country. Where when the Indian made vaccines were taking time, we only said, okay, there's an X number already available. Why can't we import more and vaccinate more people so that we can protect more people? And but to say today that because the Congress was lobbying, now the word lobbying is a very strong word. What does lobbying mean is what I want to ask the BJP. Lobbying, in their definition, I want to ask so that we don't misunderstand anything. So again, here I'm asking the BJP a very clear question. What does lobbying mean? Just to clarify for our viewers, the word lobbying wasn't exactly used by the union minister. He went on to say, and I just want to quote what he tweeted. He says, Rahul Chidambaram and Jairam Ramesh kept pushing the case of foreign vaccines during COVID. He hasn't even named Pfizer as far as pushing the case goes. And like I said, P. Chidambaram also, and like you conceded, that you have been asking why not make room for more vaccines back then. But I want to ask you, yes, you have the right to ask questions as the opposition, as an individual in this country, because that's what democracy gives us the right to. But if the government was in negotiations with a particular company and they deemed it fit that there was reason for why they shouldn't have brought Pfizer on board, then shouldn't the Congress and everybody else in the opposition have had that vote of confidence in the government, because it was a situation of national health and national priority? Poonam, I like the way you've used the correct words in the same question. You've said that, of course, it's a healthy democracy, yet the asking questions has been looked down upon. Well, how can we have, please understand, there is a complete lack of transparency, not on this issue, but in every other issue. Please, let's not forget the conduct of the government before COVID attacked the way it did. If you recall, while Mr. Rahul Gandhi was saying COVID is coming, make way and may take precautions, what was the government doing? It was welcoming Mr. Trump in Gujarat, etc. Right? So when you look at that conduct on behalf of the government, on behalf of BJP, please tell me, where is the trust? How can the opposition, how can the citizens of this country, for that matter, trust the government when that was the behavior, that was the conduct, while the world was already fighting and preparing for COVID? Sure. So, Tushar Gupta, this is not about pushing anyone's case, the Congress says. This was just about us asking questions, and we have every right to ask the government as to why we were not getting more vaccines on board, because the situation was slowly and steadily, unfortunately, going out of hand. You know, Poonam, here's the thing about internet. Nothing ever goes away. Now, let's refresh our memory for a second here. In April 2021, we were probably facing the worst calamity during the COVID years, and that was the Delta wave. And everyone was quite afraid, quite fearful of what was going on. That is when the question of Pfizer came up. That why can't we import this vaccine? It wasn't just the Congress. A lot of experts, a lot of celebrities, a lot of personalities were questioning on Twitter. I remember a report I wrote during those days, and I'm telling you, the first concern relating the Pfizer vaccine was that the pricing was around $20 and the storage was a problem. That was what the media was reporting. That is why the government isn't going for that vaccine. But what came out later from the Central Drug Standard Control Organization was that there were three problems with the Pfizer vaccine. One, they were not willing to disclose the serious adverse events that were happening after the vaccine. Two, they were not willing to generate a local study within the population as to how the vaccine was generating an immune response against the pathogen. These were the two bigger problems. And three, there were some reported cases of palsy after the vaccine had been administered. And when these information came out, when the specific episodes came out, when the media, right after, Pfizer withdrew its application for vaccines in India. That is how it happened. So today, when the union minister points out, he's not asking the wrong questions. Not to say that the Congress concerns were futile or they had no right to be concerned, but a proper study had to be conducted. Imagine, Poonam, today we had imported those vaccines. We had generated them within the public without the companies, any local study within the population, how harmful it would have been. And the fact that they wanted the indemnity clause, they wanted to not be liable for any after effects that would have come out of their vaccines being administered. That's perhaps the biggest reason why the government decided against it.
Poonam, they were not willing to conduct any local study. See, vaccines impact different populations differently. All the government of India asked of them was, why don't you conduct a local study within the population, see how your vaccine generates an immune response against the pathogen? Because that's what the vaccine is supposed to do. They denied it. They denied it completely, and then they wanted the vaccines to be rolled out in India. Tell me how's it fair? Right, but even as the Union Minister puts the Congress in the dock, the Congress says that all we wanted was transparency, and with this government, irrespective of issue, the transparency is something that is lacking, which is why we are so doubtful of the government's intentions, and which is why we raise these questions. Poonam, it's not like the government stopped Pfizer from rolling out the vaccines in India. Pfizer itself withdrew its application after this information came out, and came out in April 2021. I can show you the report from April 2021 that I wrote myself. It's not like the government of India was hiding any information. They said these are our concerns. And after that, instead of addressing those concerns, Pfizer simply withdrew its application. Now tell me who's guilty here, the company or the government of India? It's very evident. Sure. So Swati Malik, now that the facts are out in the open, now that we know that there were several issues with the Pfizer vaccine, and perhaps in the long run, we do know it was a good decision to not let them in Indian market. In that particular case, do you think Congress, as the principal opposition, as a responsible opposition of the country, perhaps should have not raised those questions of giving that window to these kind of vaccines without there being a proper study? Poonam, I completely this question of yours, because what was the time given for study? Please understand, Covishield, Covaxin, all these vaccinations, for example, none of us had enough time to study any vaccination for that matter. Sure. So but when questions were raised about the Pfizer, efficacy of those vaccines as well. When we were asking for other it wasn't just Pfizer. We were also asking for the other the global vaccinations to be imported if it was good, if it was being feasible. As far as these terms, why the deal did not go through? Now the deal did not go through. The reason that we were, right now also, Tushar just explained what were the initial reasons which were given. These detailed reasons came out much later, after hue and cry was made by the Congress, made by the opposition. It wasn't right in the beginning that they said that we are not, it's the indemnity bond, that is the reason we are not going to, the deal is not going to go through. That was not the reason initially. Initially was some security reason in terms of, our sovereign assets will be kept as security, etc. And of course, the temperature bit of it and the cost. These 2-3 factors were given. Had indemnity been there, I'm sure, all of us, this is a healthy opposition today. There's a constructive opposition today. Our purpose here, being in the opposition, is not to, dilute what the government is doing for the welfare. All we are saying is it enough that you are doing? Especially considering the fact. It's just questions that are being raised. Yes, it's just questions that are being raised, and that's what every opposition party in this country, every individual in this country is has the right to do so. Tushar Gupta, I'm running out of time, but 30 seconds. Go ahead. Again, Poonam, those were such times that I do not want to discard the intent of the Congress. Maybe they meant well, but then you have to trust the government of the day. And it was the Congress president, along with 10 other opposition leaders, that signed a letter which was sent to the Prime Minister, where they said, we want you to lead the vaccine procurement, we want you to lead the vaccination drive. After they themselves said that, why don't you give the states more control? So I'm all in for the Congress's intent, because such were those times. But today they cannot sit here and pretend that they were holier than thou during the pandemic. They had also their toolkits going around. They had a lot of stuff going around. But in hindsight, I think it was the best decision to let Pfizer not roll out its vaccines in India. Bottom line. Absolutely. Perhaps good riddance, as some would say, as far as the new facts that have come out. But this political war of words continues to simmer here in the country. For the moment, thank you so much for joining us here on this broadcast, both my panelists, with your perspective. We are slipping into a quick break here on this edition on Nation at 5. Back in just a few minutes. Then perhaps we can talk about how the president needs to step aside, so that there is a sense of fair play and justice that comes in when a hearing happens. No, I want to ask V. Krishnaswamy. So one of the things that Bajrang Punia today said in his press conference is, just by this gentleman Brij Bhushan Singh stepping down, you are not going to rid his power or his influence on the federation. He's just going to fill it up with a proxy. Now they are saying the entire WFI needs to be dissolved. An entirely new management, an entirely new federation should come in its place, which does not have Brij Bhushan Singh's influence or control. Do you buy that?
No, I really don't buy that. I mean, you can't say that there is just if there is just one bad apple, you can't throw away the entire basket. I mean, you just can't get rid of that. I'm sure if India has produced some good wrestling results over the past few years, it's also because there are some good coaches, there are some good officials. I'm sure about that. योगेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरा देश देख रहा है कैसे पिछले 2 दिनों से हमारे जो रेसलर्स हैं वो सड़क पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उनका मानना ये है कि सिर्फ बृजभूषण सिंह जो अध्यक्ष हैं उनके जाने से या उनके इस्तीफा से मामला सुलझेगा नहीं। उनको ये चाहिए कि पूरा जो WFI है वो भंग किया जाए। देखिए, मेरे को ये लगता नहीं है कि बात पूरे देश की जो बॉडी है ये भंग होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स कोड में इसका ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। हाँ, जो इनकी असली जो मांग है, जो खिलाड़ियों की जो आरोप लगाया है यौन शोषण का, उस पे सरकार को जो ध्यान देना चाहिए, उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। जो चीजें हैं जो खिलाड़ी जहाँ से परेशान है उस पे काम होना चाहिए। जो इनकी दिक्कतें हैं वो है। और मेरे को लगता है कि पूरी बॉडी, पूरे देश की जो स्टेट बॉडी है वो ऐसे जी खत्म करना, ये शायद कहीं भी प्रावधान में ये चीजें नहीं लिखी है। और ज्यादा मेरे को पता नहीं, पर जहाँ तक मेरे को लगता है, हाँ, जो चीजें जो मांगे हैं, जो डिमांड है, जो पहलवानों की जो चीजें हैं कि भाई उन पे यौन शोषण हुआ है, तो उस पे सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। योगेश्वर जी, सबसे जो महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने लगाए हैं कि वो है यौन शोषण का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ये तो क्रिमिनल है, इसके लिए कंप्लेंट होनी चाहिए, उसके बाद FIR होनी चाहिए। विनेश फोगाट ने आज ये भी बोला कि कल तक तो 2-3 लड़कियां थी जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आज 5 से 6 महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बाकी जगहों से 5 से 6 लड़कियां ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है। तो आपको लगता है कि तुरंत इस पे FIR होनी चाहिए और पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए? इसके कानून के सभी कानून का एक कानून बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है हमारी, कि उसके दायरे में कि हम क्या काम कर सकते हैं, कानून से बाहर रह के हम क्या काम कर सकते हैं। सरकार भी बस एक यही कर सकती है इसमें कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो जांच किसी से हो, चाहे CBI से जांच हो। पर जो हम आरोप लगाए हैं, जो अगर जब तक कुछ FIR दर्ज नहीं होगी तब तक मेरे को लगता नहीं ये चीजें होंगी। जब तक कोई सामने आके ये चीजें नहीं बोलेगा, कोई विक्टिम तो इस चीज में होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके अलग तो ऐसे तो बीच में कोई ऐसी बात आती है तो लोग जब तक सामने नहीं देखते, प्रोटेस्ट को नहीं देखते कि भाई ये चीजें हैं, तब तक उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी नाउ गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट। विल बी जॉइंड इन अ मोमेंट बाय राहुल मेहरा, Israeli government counsel. He's the man who took the BCCI to court. V. Krishnaswamy is sports journalist. Jayaprakash is joint secretary of the WFI and wrestler. Here in our studios, G. Rajaraman, sports commentator. Varsha Chaudhary is a wrestler as well. Let me start with Jayaprakash. आप joint secretary हो WFI का. I think it's got to a situation where बृजभूषण सिंह जो है वो WFI के अध्यक्ष के रूप में अभी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रेसलर्स ने बोला है बेसिक मिनिमम स्टेप जो है, दिस हैज टू बी टेकन, ही हैज टू गो। आपका क्या कहना है? क्या बृजभूषण सिंह अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, अभी कोई जो आप बता रहे हैं कि भाई ये चार्ज लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसा किया है सोशल, तो अभी तो कोई किसी ने बोला ही नहीं है कि भाई आप, दूसरे ही लोग तो बता रहे हैं कि भाई इन्होंने इस तरह से यौन शोषण किया है। आप कोई ऐसा तो सामने नहीं आया उठ के कि भाई हाँ मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, विनेश फोगाट ने जो आज बोला है, आपने सुना भी है, विनेश फोगाट ने जो बोला कि कल तक 2-3 लड़कियां ही थी, आज 5-6 लड़कियां उनके संपर्क में हैं और उनको ये मजबूरी ना की जाए कि वो पुलिस कंप्लेंट किया जाए। आपने सुना ना? देखिए, नहीं, मैंने सुना है, अब आपने सुना है, अच्छे से सुना है, पर ये बताइए कि मैं भी ओलंपियन हूं, मैं भी कोई अगर इस तरह की बात बोलूंगा कि विश्वास किया जाएगा कि एक ही दम मैं बोल दूंगा कि भाई ये हो रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे मेरा? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? 3-3, 4-4 ओलंपियन रेसलर्स जो हैं, जो महिलाएं हैं, वो सड़क पे बैठे हैं और आरोप लगा रहे हैं पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने। क्या आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, आरोप लगा,
नहीं ठीक है, आप वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं क्या सच मान लेंगे क्या? आप लोग सच मान रहे हो क्या इस बात को? सर जी, उसमें तो कार्रवाई होगी, पुलिस कंप्लेंट होगी, एफआईआर होगी, वो मैं मान सकता हूं, वो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम वो इस्तीफा तो दे दें, कम से कम वो ये कह दे कि मैं पेंडिंग इंक्वायरी स्टेप डाउन कर रहा हूं, इतना तो बनता है। नहीं, वो क्यों बोल दे, ये कह दें कि भाई हाँ ये गलत, ये मैंने किया है, क्योंकि आरोप तो उनके खिलाफ है, इसलिए तो उनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। आरोप तो आपके खिलाफ नहीं है या मेरे खिलाफ नहीं है, आरोप तो उनके खिलाफ है, तो नैतिक तौर पे तो जिम्मेदारी बनती है ना उनकी। क्या आरोप है? यौन शोषण की आरोप है। कौन आरोप कौन बता रहा है? करप्शन के आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है। ये 3-4 ओलंपियन मैं भी लेके बैठ जाऊं, मैं भी आरोप लगाने लगूं, मानेगा? क्या बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी, मतलब देश देख रहा है, सुन रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? बताइए मुझे एक ही बात। नहीं, आप थोड़ा मतलब ध्यान से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये आरोप तो नहीं, एफआईआर होनी चाहिए, कोर्ट में जानी चाहिए, ये सब ठीक है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये तो मत कहिए कि 3-4 आदमी के साथ बैठ जाओ और मैं भी बोल दूं कि क्या सच हो जाएगा। क्या विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक 3-4 आदमी हैं? आपके नजरिए में वो जरा सा आदमी है, साधारण आदमी है? क्या कह रहे हैं? स्पोर्ट्समैन है आज, अच्छे नहीं सुनिए, आज अच्छे स्पोर्ट्समैन है, मैं भी बोलता हूं जी, लेकिन ये थोड़ी है कि आप जब तक इंक्वायरी ना हो, जब तक कोई जांच ना हो, जब तक जांच करानी पड़ेगी। यही कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, लेकिन जांच तभी हो पाएगी जब ब्रिजभूषण सिंह, एंड आई वांट जी राजारामन विकृष्ण स्वामी आल्सो to weigh in on this. There is no way you can have an independent, unbiased investigation against Brijbhushan Singh and the coaches as long as the people who are accused of that are still sitting in positions of power. It's as simple as that. You have to step down pending inquiry. Of course, nobody is prejudging the outcome. Let the police go into the heart of the matter and come to a conclusion one way or the other. But I'm convinced that you can't have that person sitting in a position of authority. Welcome back. In the wake of 2 attacks on temples in Melbourne, the Australian High Commission in India has now reacted. They've said that, like India, Australia too is a proud multinational country and they are shocked at the vandalism at these Hindu temples. The Australian authorities are investigating the matter, they confirmed. The High Commissioner also said that Australia's strong support for freedom of expression does not include hate speech or violence. However, no arrests have been made so far as the Indian diaspora demands strictest of action against the perpetrators. Abhishek, my colleague, now joins us for more on this. Abhishek, the High Commission in India has now reacted, but do we know if this matter has been taken up by India with its counterparts and what the investigation is in each of those cases? So India has clearly taken up this matter both at Melbourne and Delhi. Yesterday, India's External Affairs Minister's spokesperson, Arindam Bagchi, said that the issue of vandalism on the temples in Melbourne have been taken by India at diplomatic level. India has also reported the issue to the local police authorities. We know that in Australia, about 1% of the population is of Sikhs, and about 2 lakh Sikhs live there. And in that context, it becomes really a danger for the local community as well if some extreme propaganda by Khalistanis continue to spread in that zone. We know that Khalistanis have apparently fixed the date of 29th of January for the Australian Sikh chapters to have a referendum regarding Khalistan, which India has voiced its concern over. Today, Australian High Commission has also reacted, saying that freedom of speech does not mean that the hate mongers will also be included in that as part of the freedom of speech. So now we have sort of reaction coming from Australia also on the issue of vandalism that has happened in Melbourne on temples. Right, so Australia is looking to take action, but unfortunately so far the investigation hasn't revealed much. These 2 instances had come to the fore within a span of 2 weeks in the city of Melbourne. Several Hindu community members there had raised the issue, demanding strictest of punishment for the perpetrators. But Abhishek, we are seeing this kind of propaganda by pro-Khalistanis across several other countries as well, including UK and Canada. Yes, in fact, Australia is emerging as one of the destinations where these Khalistani propagandists are getting shelter and voice. Also, Canada and UK were earlier, and some other countries in Europe also, they had this issue of Khalistanis being there, propagating their views and trying to shore up support in the name of Khalistan and doing referendums.
In fact, Canadian government has also in the past allowed these referendums on the pretext that they don't, they would like all sort of voices, all sort of democratic protests to continue in their territory, and everybody who has a peaceful way of protesting and demanding their rights, they can continue with that. But India has objected to that also. Right, Abhishek. Thank you so much for getting us the latest on that. With that, it's a wrap from me on this edition of Nation at 5. Thank you so much for tuning in. The standoff between the judiciary and the government over the appointment of judges to high courts and Supreme Court has taken an ugly turn. The Supreme Court Collegium has released publicly the intelligence reports on at least 5 judges who were to be appointed, or at least who were recommended by the Collegium to be appointed to various high courts. And the Collegium has made public their rejection of these intel reports. Now, they vary from being openly gay to having a foreign partner to even expressing one's opinion on social media. Now, this, the government says, will be a matter of discussion between the Collegium as well as the government. But at the same time, the government also insists that the Collegium system itself is opaque. It needs reform, and only judges appointing judges cannot be kosher anymore. At this stage, what's going to give and how?